Hello students, this is the last part of units and dimensions. In this part, mainly we will discuss about the third application of dimensions, that is to establish relation among different physical quantities. So, पहले headings लिख लेते हैं. This is the third use of dimensions, to establish relation among different physical quantities. तो ये हमारा हेडिंग रहा गया. एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि मान लो इफ वन क्वेश्चन इज देयर लाइक लेट F is the force acting on an object of mass m at rest, and due to the application of this force the object gets accelerated by an amount a, right? Now you are asked to establish relation among these three different physical quantities. So this is nothing but a very simple, very well-known equation. We know that this relation which is equals to F equals to ma. So this is the relation involving these mentioned three physical quantities, right? तो ऐसा actually क्या होता है? Just if you are given three different quantities like force, mass and acceleration, and you are asked to find relation, then using the method of dimensions easily we can derive this relation. अगर इस क्वेश्चन में इस तीन क्वांटिटी के साथ साथ और भी एक चौथा क्वांटिटी को मेंशन कर दिया जाए तब भी क्या होता है, फिर भी जैसे कि मान लो बोला गया कि फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास, इट्स एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, मान लो s बताया गया क्वेश्चन में. तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हम लोग एक्चुअली जब भी डायमेंशन यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को मिलेगा कि s का पावर में 0 आ जाएगा, मतलब एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, ऑटोमेटिकली ये वाला टर्म गायब हो जाएगा और जो एक्चुअल रिलेशन है वही अल्टीमेट एक्सट्रैक्ट में आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ही दो चार क्वेश्चंस हम लोग कंसीडर करेंगे, फिर देख लेंगे. पहला तो ये वाला इक्वेशन हम लोगों को डिराइव करना है, फिर और एक क्वांटिटी क्वेश्चन को हम लोग कंसीडर करेंगे जिसमें दिखाया जाएगा कि एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी को ऐड किया गया जो कि एक्चुअल फॉर्मूला में नहीं रहता है. मतलब वो एक्चुअली वो प्रूफ कर देगा कि मतलब कोई भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी को हम लोग अगर गलती से कंसीडर कर भी लेंगे फिर भी क्या हो जाएगा, अल्टीमेट एक्सप्रेशन में हट जाएगा. ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं. Question number 1, the force F acting on an object depends on its mass bracket m and its acceleration a, and you are asked establish relation among the given physical quantities. Okay, so the question is to establish relation among this F, this mass, this acceleration A. Okay, तो अभी हम लोगों को इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस. सो सॉल्यूशन. तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया कि F वेरीज विथ मास, तो क्वेश्चन ये है कि वेदर इट वेरीज विथ मास डायरेक्टली और इनवर्सली, हमें ये नहीं पता और क्वेश्चन में ये बताया भी नहीं गया. तो हम लोग इसे कैसे कंपेयर करें? तो पहले हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि फोर्स F वेरीज विथ मास
और जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर m के पावर में 1 आ जाएगा, दैट मीन्स दिस f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, बट इफ द पावर इज -1 then in that case we will find that f is inversely proportional to m, but this is unknown, we don't know actually how f varies with mass. That's why in order to generalize it, we will be considering the value in its power as x, and then later we will find the values of various powers x, y, z, etc. like this. So this is our first condition where we find that f varies with mass, but how does it vary, whether it is directly or inversely, we don't know. That's why we have considered it as x in its power. Now the second condition is that force also depends on acceleration, so we can write f directly proportional to a, and in its power the same thing, we don't know whether it is 1 or it is -1, whether it is 2 or -2, so we will put in its power as y. Now if we combine these two equations, we will be getting okay, let me write combining the above equations, we can write f directly proportional to m to the power x, a to the power y, right? Now if we have an equation where RHS and LHS are directly proportional, then we can equate them with the help of a proportionality constant. So here we will be using a proportionality constant right now. So f direct equals to the proportionality constant, let it be k. K is the dimensionless proportionality constant, right? So the new form of this equation becomes f equals to k m to the power x a to the power y. So this is our equation number 1, and here we also have to mention that where k is a dimensionless proportionality constant. Okay, now rewriting equation 1 with dimensions, चलो वहां पे कंटिन्यू करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोगों को क्या करना है, डायमेंशन के तौर पे लिखना है, ठीक है। तो पहले लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, दिस इज f, so the dimension of f is, we know, m1 l1 t minus 2. This is the dimension of f. In the RHS right hand side, first quantity, that is k, we know that k is a dimensionless constant. Then we have m, that means mass, and so we can write the dimension of mass as m1, and in its power this is x. Then we have acceleration, right? So the dimension of acceleration is l1 t minus 2, and in its power the number is y, right? Now let's combine these two dimensional equations. We will be getting m in its power, this is x. Then we have l का पावर में क्या आ जाएगा, जैसे कि ये y, this is common to all these both these two terms l and t, right? So in its power of l we can write this is y, and in power of t, this is here already we have minus 2, and if we multiply this power by y, we will be getting minus 2y. And in our left side we have m1 l1 t minus 2. So these are two dimensional equations. Now comparing the powers of m, l and t from both sides, we will be getting, now comparing the powers of m, l and t from both sides of the above equation, we get क्या मिल रहा है, जैसे कि m का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे
x है m का पावर में, तो हम लोग लिख सकते हैं x is equals to 1, this is equals to 1. Again here we find that power of L is 1 and here it is y, so simply we can write y is nothing but equals to 1. Then the third one, here it is t to the power minus 2 and here it is t to the power minus 2y, so we can write minus 2 equals to minus 2y or y is equals to what? 1. So ultimately यहाँ पे हम लोगों को मिल गया पावर में क्या है, x equals to 1, y equals to 1. So now using the powers of x and y in equation 1, in this equation, okay, using powers of x and y in equation 1, क्या मिल रहा है हम लोगों को, f equals to k, m के पावर में क्या है x, तो m और इसका पावर में 1 इंस्टेड ऑफ x एंड यहाँ पे a पावर में y एंड y is equals to 1, so we can take this. Therefore we can write f equals to kma. हम लोगों को ये इक्वेशन अच्छी तरह से पता है कि f equals to ma, पर ये बीच में k कहाँ से गया. Actually we will say that if the value of k is determined experimentally, then we find that k is nothing but 1. Value of k is nothing but 1. तो अगर हमें ये वैल्यू पता है, जैसे कि एग्जैक्ट इक्वेशन अगर हमें पता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक्चुअल इक्वेशन है f equals to ma, मतलब k का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. अगर सही इक्वेशन हमें पता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि k एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ k इज फाउंड टू बी 1. अगर ये इक्वेशन हमें नहीं पता तो हम लोगों को क्या करना है, बस इसी इक्वेशन में इसको छोड़ देना है. दैट मीन्स दिस इज द फाइनल आंसर. एंड इफ the actual equation is known to you, then you have to compare this equation with this actual equation and find the value of constant. Okay, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे experimentally the value of k is found to be 1. Therefore the established relation is f equals to ma. So this is our final result. Okay, now I have to erase this and then we will solve the next question. Okay, the next question is the time period of a simple pendulum depends upon its mass m, acceleration due to gravity g and length of the pendulum. Find the expression for time period using dimensions. Okay, so I have to establish relation between time period and the various quantities like mass, acceleration due to gravity g and length of this pendulum l. तो यहाँ पे हम लोग अगर ड्राइंग करेंगे तो कैसा रहता है. सो दिस इज ए रिजिड सपोर्ट फ्रॉम दिस सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग. सपोज यहाँ पे एक बॉब को सस्पेंड किया गया, ठीक है, और ये जो लेंथ है दिस इज नोन एज द लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम एल. ओके,
अभी क्या होता है, जैसे कि मान लो इस बॉब को यहाँ पे लेके हम लोग छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, ये ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, राइट। और time period means what? It is the time required to complete one oscillation. That means if you just release this object from here, after certain some time this object will return back to this original position, right? So the time required to complete one oscillation is known as time period. तो यहाँ पे बताया गया कि it also depends, this time period t depends on its length, depends on its acceleration due to gravity, and also depends on its mass of this object, right? तो देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर दैट दिस टाइम पीरियड t डिपेंड्स ऑन इट्स मास। नाउ हाउ डज इट डिपेंड ऑन मास, वेदर इट इज डायरेक्टली और इनवर्सली, एंड वेदर इट इज m स्क्वायर्ड और -2 पावर में है, क्या पता है, हमें कुछ नहीं पता। दैट्स व्हाई वी विल बी कंसीडरिंग दैट दिस इज नथिंग बट a in its power, whatever will be the value of a, that will be calculated later, okay। तो पहले ये लिखा। सेकंड कंडीशन क्या है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके ऊपर क्या डिपेंडेंट है, कैसे है वो नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं दिस इज बी। देन द थर्ड कंडीशन इज इट वेरीज डायरेक्टली विद length of this pendulum, so this is our L, and in its power let's consider it is C. So after combining these three equations, combining given equations, क्या मिल रहा है, here it is T directly proportional to m to the power A, G to the power B, L to the power C, okay। So since these two sides are directly proportional, we can equate them with the help of a proportionality constant. तो लिख सकते हैं, और T is equals to, here we will be considering a proportionality constant, that is K, m to the power A, G to the power B, L to the power C. Here this K is nothing but a dimensionless proportionality constant. You always have to mention this after writing such kind of dimensional constants, okay। Now oh, this is our equation number 1, right? Now rewriting equation 1 using dimensions, क्या मिलेगा, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, दिस इज T1, राइट, टाइम पीरियड का डायमेंशन T1। दिस K इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सो फॉरगेट अबाउट इट, हियर इट इज m, तो m पावर में 1 और थर्ड ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा, दिस इज पावर A। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो इट हैज डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन नथिंग एल्स, सो व्हिच इज इक्वल्स टू L1 T minus 2, and in its power it is B. Here it is the third quantity, which is nothing but length of this pendulum, dimensions of length, and in its power also it is C. तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, so T1 is equals to m पावर में A, और यहाँ पे क्या है L1, तो इसका पावर में है B, मतलब क्या आ जाएगा L to the power B, और यहाँ पे आ रहा है L to the power C, तो ये दोनों पावर को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं L यहाँ से B, इस यहाँ से C, तो L B प्लस C, देन T का यहाँ पे पावर है -2B, एंड हियर इट इज C, सो वी कैन सॉरी देयर इज नो T, सो दैट द पावर ऑफ T इज नथिंग बट -2B, so this is our dimension equation. Now comparing powers of M, L and T, we get क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो m तो है नहीं, तो जैसे कि इस इक्वेशन को हम लोग मॉडिफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि here
पावर ऑफ m इक्वल्स टू 0, l इक्वल्स टू 0, l का पावर में 0, मतलब ये हो गया। तो कंपेयर करने के बाद क्या मिल रहा है, a इज इक्वल्स टू व्हाट 0, l यहाँ पे 0 है, 0 इज इक्वल्स टू b प्लस c। ओके, यहाँ पे मिल रहा है t का पावर में 1, 1 इक्वल्स टू माइनस 2b। तो यहाँ पे देखो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू व्हाट, b इक्वल्स टू माइनस हाफ, राइट। तो इस b का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू माइनस हाफ प्लस c, दैट मीन्स व्हाट, c इज इक्वल्स टू हाफ। ओके, नाउ पुटिंग ऑल these values of a, b and c in equation 1, from equation 1 we'll be getting t equals to, पहला वाला चीज क्या है, k, let it be k, then m पावर में 0, g पावर में क्या है b, और and b is equals to माइनस हाफ, एंड l इसको पावर में है हाफ। ठीक है, अभी देखो जैसे कि हमें पता है कि जब भी किसी एक हम लोग सिंपल पेंडुलम को कंसीडर करते हैं, एक्चुअली इट इज मास डिपेंडेंट, मतलब ये 5 किलो वेट का है बॉब या 3 किलो का है, इट डजंट मैटर। अगर सेम हाइट से इसको छोड़ा जाए तो देन इन बोथ दिस केसेस वी विल हैव इक्वल टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे एक्चुअली मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो देखो हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया, वहां पे एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी व्हिच इज मास कंसीडर किया गया था, अल्टीमेटली क्या हुआ, उसका पावर में 0 आ गया, मतलब ये क्वांटिटी गायब हो जाएगा, है कि नहीं। तो k m टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे g टू द पावर माइनस हाफ व्हिच इज इक्वल्स टू 1 बाय स्क्वायर रूट g, एंड l टू द पावर हाफ दैट मींस स्क्वायर रूट l। तो अगर ये दोनों को कंबाइन किया जाए देन वी विल हैव k स्क्वायर रूट l बाय g लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू t। अभी देखो पहले हम लोगों ने डायमेंशंस का करेक्शंस और क्या क्या अप्लाई किया था, तब हम लोगों को ये इक्वेशन मिला था एक्चुअली पहले। द इक्वेशन इज एक्चुअली t इक्वल्स टू 2 पाई रूट l बाई g। अगर तुमको ये इक्वेशन जाना पहचाना लगे तो उसके साथ कंपेयर करके तुम k का वैल्यू बोल सकते हो कि देखो यहाँ से लग रहा है कि k इज नथिंग बट 2 पाई। ठीक है, तो अगर ऐसे हम लोगों को पता चल जाएगा तो हम लोग लिख लेंगे कि k एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ k इज फाउंड टू बी 2 पाई। अगर ये नहीं पता है बस यहीं पे आंसर खत्म कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ k is found to be 2 pi, right? Therefore t equals to 2 pi square root l by g. So this is our final result. ठीक है, हो गया। डायमेंशन के जरिए वो जस्ट क्या बोला था गया था क्वेश्चन में कि दिस आर टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन दिस। तो अल्टीमेटली डायमेंशन का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इक्वेशन डेरिव कर ही लिया। मतलब ऐसा डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट क्वांटिटी को हम लोग कंसिडर करेंगे तो हम लोग आसानी से ये सब के बीच में एक रिलेशन फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं। Consider an object moving of mass m moving along a circular path of radius r with velocity v. Find the expression for centripetal force
एक्टिंग ऑन इट डायमेंशनली। ओके, तो कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, इट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद अ वेलोसिटी v, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग मतलब मैं अभी कुछ ज़्यादा कुछ लिखने वाला हूँ नहीं, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, ठीक है। पर तुमको जब भी एग्जाम में करना है फुल डिटेल में लिखना पड़ेगा, माइंड। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फोर्स वेरीज विथ इट्स मास, राइट। पावर में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, क्या करेंगे, कुछ भी एक्स वाई जेड और ए बी सी, लेट इट बी ए, ओके। देन दिस फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस। पावर में क्या है पता नहीं, डायरेक्टली और इनवर्सली लिख देते हैं बी। देन एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, also it also depends on velocity, so in its power c. So after combining these two equations, we'll be getting f directly proportional to m to the power a, r to the power b, v to the power c. Or with the help of or using a dimensionless proportional constant, we can write this equation as f equals to k m to the power a, r to the power b, v to the power c. So this is our equation number 1. Now we will simply write the dimensions on both sides, okay. Dimensions, writing dimensions, तो लेफ्ट साइड में क्या मिला है, डायमेंशन ऑफ फोर्स विच इज इक्वल्स टू m1 l1 t माइनस 2। राइट साइड में ये क्या है, डायमेंशनलेस है, तो इसका डायमेंशन मतलब इसका तो डायमेंशन है नहीं, तो हम लोग को कंसिडर करना है मास। मास के लिए m1 पावर में a, फिर आ रहा है दिस रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ ही है, तो इसका भी l1 पावर में b, फिर आ रहा है ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, l1t माइनस 1 पावर में c। तो आफ्टर कंबाइनिंग द वेरियस पार्ट्स विल बी गेटिंग m पावर में a, l का पावर में यहाँ पे b, यहाँ पे c, दैट मीन्स b प्लस c, और यहाँ पे सिर्फ t एक ही बार है जिसका पावर है माइनस 1, सो हम लोग लिख सकते हैं t माइनस और यहाँ पे पावर c। सो दिस इज द अल्टीमेट इक्वेशन। नाउ comparing powers of m, l, t from both sides, ओके क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 1, यहाँ पे b प्लस c इक्वल्स टू 1, यहाँ पे माइनस c इक्वल्स टू माइनस 2, दैट मीन्स c इक्वल्स टू 2, और c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो b प्लस 2 इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू माइनस 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये a b c का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होता है, जैसे कि ये f इक्वल्स टू k m टू द पावर a का पावर a मीन्स 1, देन r का पावर में b इक्वल्स टू माइनस 1, और v का पावर में c एंड c इज इक्वल्स टू 2। तो ये रहा फॉर्म, अभी इसको अरेंज करना है थोड़ा, k m v square, and since in its power it is minus 1, we can write m v square by r। तो जैसे कि हमें पता है कि द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज f इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाई r, मतलब यहाँ पे अगर कुछ कॉन्स्टेंट्स है तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, k का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम लोग बोल देंगे कि एक्सपेरिमेंटली the value of k is found to be 1, therefore f equals to m v square by r। अगर तुम यहाँ पे छोड़ दोगे then also it is okay। so this is our final result। ऐसे ही तुम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा, मैं डाल दूंगा PDF फॉर्म में, तुम लोगों को वो सब सोल्व करना है, ठीक है। तो
मतलब ये डायमेंशंस एनालिसिस के ऊपर ख़त्म हो गया। अभी यूनिट्स जैसे कि पहले वाला चैप्टर उसका ही थर्ड पर्सन रह गया, वो है एरर्स एंड कैलकुलेशंस। तो उसके लिए और एक वीडियो मिलेगा, बस वही से फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।